कोई है तो 3:30 को एक चाय भिजवाना। 3:30 को 10 मिनट का ब्रेक। यस, चल करो। राइट, मेटाबोरेट, वेयर डू यू स्टार्ट? बोरिक एसिड H3BO3 minus H2O HbO2 metaboric acid BO2 minus. I will tell you the significance later. Why are you standing? Okay. Metaphosphate phosphoric acid minus H2O to give you HPO3, PO3 minus. So that is how one has to do systematically. Repeat the exercise. Orthosilicate H4SiO4 is orthosilicic acid. Remove all the hydrogens. SiO4 4 minus. Why is it a weak acid? Why is it a weak acid? Sorry? Sorry? Can't be heard. Driving oxygen nahi hai na, खींचने वाला. खींचक. One who troubles the hydrogen. Metasilicate minus H2O. H2SiO3 and hence SiO3 2 minus. Pyrosilicic acid H4SiO4 plus H4SiO4 minus H2O, which will give you Si2O7 6 minus. Pyrophosphate, see the pyrophosphoric acid H4P2O7 P2O7 4 minus. दोबारा बताओ, phosphoric acid plus phosphoric acid minus H2O H4P2O7. Did you inquire in the office about that exercise? फाइल में होगा, पड़ा होगा. अगर नहीं तो मैं घर से मंगाऊंगा, नासिक से मंगाऊंगा. क्या है, फोटो कभी भेजेगा? या तो इनका कॉपी ही हम पेंसिल से लिखा है ना, मिटा देंगे. या मेटाफॉस्फेट, वेयर डू यू कम अक्रॉस? As you told me, borax bead test, which is not there in the syllabus. What is borax? Na2 B4O7 10H2O. When a transition metal ion is heated with them, what happens whenever a hydrated salt is heated? First change in a hydrated, no, hydrolyzed हो जाता है. Hydrated salts, they first get hydrolyzed. H2B4O7 टेट्राबोरिक एसिड बनेगा. और हीट करो, यू गेट H3BO3. और हीट करो HbO2. और हीट करो B2O3. एंड दिस कॉपर आयन, इनफैक्ट यहां ही रिएक्ट कर सकते हैं हम. Copper ion, metaboric acid, you get cupric metaborate twice. And this is a glossy bead. What do you mean by glossy? Shining like this. Glossy bead, you know what are beads. Now, depending on the color of the glossy bead, different transition metal ions. Who will give this? Who will give this test? Only transition metal ions give this test. Others don't.
Depending on the color of the glossy bead, we can identify which transition metal ion that is. Identification of cation. Next, metaphosphate, sodium hexametaphosphate. NaPO3 whole 6 times. It is written as Na2, Na4, PO3 6 times. इसका ट्रेड नेम है कैलगन. यू नो व्हाट इज द ट्रेड नेम? प्रोडक्ट नेम वाटर सॉफ्टनर. प्रोडक्ट क्या है? वाटर सॉफ्टनर. इसका ट्रेड नेम कालगन. जैसे कॉलगेट के नाम पे क्या भेजा जाता है? टूथपेस्ट. प्रोडक्ट का नाम टूथपेस्ट, ट्रेड नेम कॉलगेट, कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर. 3 डिफरेंट थिंग्स. सर्फ बोले तो डिटर्जेंट पाउडर. व्हाट इज द प्रोडक्ट? द प्रोडक्ट इज डिटर्जेंट पाउडर. आजकल ऐसा हो गया एरियल सर्फ दे दो. एरियल इज a trade name, surf is another trade name. Now, it's a water softener. What are these silicates? They are part of glass. Cheap glass is sodium silicate. Cheap variety of glass. Sodium silicate. Costliest glass? Borosilicate glass. Borosilicate. Very hard. And these pyrosilicates etc., they polymerize to give sheet silicates, stain silicates. Don't read that part, silicates. Silicates mana hai. Time waste. Each silicon is surrounded by how many oxygens? Each oxygen is surrounded by how many silicons? Nonsense. What is this? Pyrophosphate. Organic compound में अगर phosphorus रहा तो all the phosphorus is converted to Mg2P4O7. Though it is tetrabasic, it doesn't form 4 series of salts. Tetrabasic है, लेकिन 4 series of salts form नहीं करता है. 2 only. Na4, Na2. सिमेट्रिक बनाता है. 4 में से चारों रिप्लेस हो गए या तो 2 रिप्लेस होगा, 3 नहीं होता है. नाउ दैट्स ऑल अबाउट anions, oxo anions. Last but 6th, how to get anhydride of an oxy acid. We are reaching polymers, after which we will be looking at color. Now, remove all hydrogens. All hydrogens in the form of water only. What is the difference between this and meta? वहाँ एक ही H2O निकालता है, यहाँ सबको निकालना है. सारे हाइड्रोजन लापता हो जाना चाहिए. H, if necessary, take more than one water molecule.
जरूरत पड़े सो एक से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल, मोर देन वन एसिड मॉलिक्यूल। कब जरूरत पड़ेगा? जब 8 नंबर होगा ना, 8 नंबर से सारे H2O नहीं निकलते हैं ना, ऑड नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। HNO3, यह H2O है ही नहीं, टेक वन मोर, HNO3 प्लस HNO3 माइनस H2O, N2O3, no, N2O5. So N2O5 is the anhydride of HNO3 and the anhydride of HNO3 is N2O5. तो एक एसिड देना, एसिड्स का लिस्ट बनाना, इसका एनहाइड्रेट निकालो, इसका हाइब्रिडेशन निकालो, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो करके एक ही एक्सरसाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट, H2SO4 माइनस H2O, नेक्स्ट HClO4, सुनो, HClO4 प्लस P4O10, HClO4 प्लस P4O10 क्या बनेगा? P4O10 इज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। 2 HClO4 पकड़ के Cl2O7 प्लस H3PO4, यहां का पानी यहां चला जाएगा। CH3CONH2, P4O10 क्या होगा? P4O10 is a dehydrating agent. Remove H2O, you get a cyanide. So just to remind you the dehydrating action, HClO4 plus HClO4 minus H2O, Cl2O7, H3PO4, yes, क्या करना है? एक और लेना है, देखो 3 हाइड्रोजन है ना, प्लस H3PO4 माइनस H2O माइनस H2O माइनस H2O, सब कैंसिल होके P2O5। P2O5 नहीं है दुनिया में, एग्जिस्ट एज P4O10 only, no monomer, मोनोमर नहीं है। Last 2 anhydrides, mixed anhydrides. What do you mean by mixed? 2 different acids ले लो, HNO3 plus HNO2 minus H2O, N2O4. It is indeed a dimer of NO2. HClO3 and HClO2 minus H2O, Cl2O4, a dimer of Cl2O2. In fact, dimer नहीं है, monomer ही है in this case. You don't have Cl2O4. Cl2O2 doesn't dimerize. I'll give you the reason later. ये dimerize क्यों होता है, वो क्यों नहीं होता है, मैं बाद में बताऊंगा. So, the ending of this concept is dimer, which will be the beginning of the next concept. We have to plan in such a way that it should be a continuous flow, not watertight compartments. इसका extension अगला होना चाहिए. IIT questions evolve. Evolve means year after year, some value addition is done to a question. Like in 2003, nickel is purified in
Mons process. In 2005, Mons process, the principle involved is vapor phase refining बोलते हैं इसको, मेटलर्जी में मैं पढ़ाऊंगा वेपर फेज रिफाइनिंग. उसके बाद वो वेपर फेज रिफाइनिंग का एग्जांपल दिया हुआ Na+4CO gives X on heating gives Y and Z. What are YZ? XYZ. This one is nickel tetracarbonyl and they are nickel and carbon monoxide once again. 2003, 5, 7 ऐसा ईयर आफ्टर ईयर वैलिडेशन हो गया. 2017 वेपर फेज रिफाइनिंग इज सिमिलर टू, क्या हुआ, लो टेम्परेचर में जोड़ रहे, हाई टेम्परेचर में खत्म हो रहे. विच फिनोमिनन मेक्स पीपल कंबाइन एट लो टेम्परेचर एंड कंपोज एट हायर टेम्परेचर? भैया केमिकल एब्जॉर्प्शन सुना है कि नहीं? केमिकल एब्जॉर्प्शन क्या होगा? फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस. So, vapor phase refining is similar to chemical adsorption. It's not similar, in fact, carbon monoxide gets chemically adsorbed only. Adsorption at low temperature, desorption at higher temperature. Last, just a small instruction, the 7th point, the hybridization. Oxidation state, shape of oxy acid and its anion are one and the same. कहने का मतलब H3PO4 PO4 3- ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा तो यहाँ नेगेटिव के साथ हैंडल करना है ना, तो इधर से निकालो -8 +3 +5, तो यहाँ +5 तो यहाँ भी +5. हाइब्रिडाइजेशन में हाइड्रोजन को क्या करना है, थोड़ा दिक्कत आएगा हमको, तो उसका हाइब्रिडेशन निकालो. 5 + 0 + 3/2 4 sp3. उसका अगर sp3 है तो इसका भी sp3. PO4 3- 4 bond pairs, no lone pair, 0 lone pair. टेट्राहेड्रल, फास्फोरस का 5वां इलेक्ट्रॉन खर्च हो गया ना, हो गया कि नहीं? ऑल 5 इलेक्ट्रॉन्स आर स्पेंट. टेट्राहेड्रल, ये अगर टेट्राहेड्रल है तो ये भी टेट्राहेड्रल. यहां एनहाइड्रेट का भी बोल सकते हैं हम. एनहाइड्रेट में क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा बदल सकता है. बिकॉज H3PO4 का क्या है, sp3, N2O5 का sp2. पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है ना, इसलिए वो ने लिखा मैं. चलेगा, हो गया. द नेक्स्ट हेडिंग, we are left with 3 points, 3 very big points. These polymers will take 2 hours, color will take 3 hours, reactivity 3 hours. I hope to complete it by tomorrow. If not tomorrow, a little time the day after tomorrow. Molecules existing as dimers, trimers, polymers. In our entire syllabus, be it organic or inorganic, पूरा का पूरा. तो जो मैं लिखूंगा वो एग्जिस्ट करता है, मैंने नहीं लिखा बोले तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा. 1 BeCl2 dimer
even in gaseous state. गैसीय स्टेट में भी डायमरेज हो सकता है. BCl2 पॉलीमर इन सॉलिड स्टेट ओनली. बताओ क्यों? सुनो, डाइमर फॉर्म होने के लिए दो मॉलिक्यूल्स को पास में आना है. गैस स्टेट में दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से आसानी से कोलाइड कर सकता है ना, लेकिन पॉलीमर बनाने के लिए बहुत मॉलिक्यूल्स को पास में आना है ना. एक बार बहुत मॉलिक्यूल्स पास में आ गए तो सॉलिड बन ही गए. यू गेट माय पॉइंट? नाउ सो पॉलीमर्स में हमको क्या सीखना है मालूम? हाउ डू दे पॉलीमराइज, व्हाई डू दे पॉलीमराइज, व्हाई डज बेरिलियम पॉलीमराइज? क्यों भाई? ओके गुड, ठीक है ना. एनी क्वेश्चन ऑन, आई विल गिव द स्टेटमेंट लेटर. एनी क्वेश्चन ऑन molecules of beryllium, boron, aluminium, think in terms of electron deficiency. Molecules, मैं किसकी बात नहीं कर रहा था? ना एटम का, ना आयन का, ना बेरिलियम का बात कर रहा था, ना BeF4 2- का बात कर रहा था, ना Al3+ का बात कर रहा था. Molecules, you will write it later, not now. Molecules of beryllium, boron, aluminium. You think in terms of electron deficiency. They look for donors. They are beggars. They are Louisists. सुनो भाई, AlF3 is not soluble in HF. Okay, HF solution, but soluble in previous IIT क्वेश्चन है केव सॉल्यूशन. वही केव में क्या है जो HF में नहीं है? सॉरी, क्या सुना ही नहीं दे रहे. कौन सा? सो व्हाट? So what if it is more electropositive? नहीं बाबा, HF में F- आयन नहीं है, आयनाइज नहीं होता. HF वीक एसिड है. एक तमाशा देखो, HCl, क्या तमाशा नहीं कुछ. You laugh at everything. There are better things to laugh in life, though. Wait. HCl, हाइड्रोजन क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन खींचेगा, खींच करके हाइड्रोजन बोलेगा मुझे सताना मत, मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो. क्लोरीन इज लाइक ए हाइजैकर, पॉइंट ब्लैंक रॉबरर. पैसे दे दो, पैसे दे के छोड़ देता. सो देयरफॉर यू विल गेट HF क्या करेगा? पैसा जरूर लेगा, मार डालेगा और डेड बॉडी को भी नहीं छोड़ेगा. वो बेचारा H+ को 2 F- पकड़ के रखते हैं. What ion is formed? HF2-. HF2, therefore that exists as KHF2. KHF2. 1 mole KF and 1 mole HF मिला है तो you get 1 mole KHF. When you have 1 mole KF, that is equal to 2 moles of ions. 2 moles of ions, and 1 mole HF is equal to 1 mole HF. 1 mole HF. लेकिन ये दोनों मिला है तो you get 2 moles of K+ and 2 moles of HF2-. So colligative properties decrease. Number of ions is decreasing. Now, so यहाँ क्या है? K में क्या है जो HF में नहीं है? F- ions. What is the role of minus in the group? Donate.
What is the role of aluminum? Beggar. So, due to the formation of K3AlF6, complex form हो जाए ना, complex का मतलब ही, sorry, complex by definition itself means big, huge. Huge means distance between the ions ज्यादा है तो weak attraction है तो dissolve हो जाता है, lattice energy कम है, dissolve हो जाता है. So unexpected solubility is due to, किधर भी देखो ये इधर soluble नहीं होता, उधर क्यों होता है? X is not soluble in Y, but X is soluble in Y and Z. The reason, complex formation. AgCl is not soluble in water. अमोनिया क्या होता है? AgNH3 ट्वाइस प्लस करके कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है. सेम इज द केस विथ AgCN, सिल्वर साइनाइड forms a complex with KCN. Unexpected solubility is due to complex formation. Next, AlCl3 exist करेगा. AlCl3 twice even in gaseous state. RCOOH, carboxylic acid. Carboxylic acid twice in कहा, carboxylic acid dimer is in water. हाँ, non-polar solvents like benzene. Polar solvents में क्या होता है? एसिड क्या होता है पोलर सॉल्वेंट में? आयनाइज होता है. 4. तो यहां भी मैंने एक सिस्टमैटिक तरीके से आ रहा हूं. बेरिलियम सेकंड ग्रुप, एल्यूमिनियम थर्ड ग्रुप, कार्बन फोर्थ ग्रुप, ऐसा. BeH2 n times in solid state. BH3 B2H6 इसीलिए नहीं बोलता हूं. स्ट्रिक्टली स्पीकिंग BH3 है ही नहीं. BH3 doesn't exist. It doesn't have independent existence. HNO twice only, no monomer. क्यों नहीं है मोनोमर? ये डाइमरेज क्यों होता है, कैसे होता है मैं बताऊं. 6. Hg2 2 plus only, no Hg plus. Hg plus अकेला नहीं रहेगा. क्यों नहीं रहेगा सोच को बता सकते. ICl3 I2Cl6. यहां some students ask me, sir, why are you teaching organic polymers? My answer is, procedure is same from 8 to 13. 8 to 13 same procedure. Metaphosphoric acid dimer, metaphosphoric acid trimer, metaphosphoric acid polymer. SO3 इसका साइक्लिक ट्राइमर, इसका पॉलीमर. C2H2. Do you have that handbook of chemistry? No? Handbook? हाँ है, अभी है. दिखाओ. कौन सा बैग? ग्रीन, हरा भरा. नहीं लाया, नहीं लाया.
Handbook Arihant ने publish किया. That's a very good book. That serves a very good purpose. हाँ? राइटर से कोई मतलब नहीं. हरिहंत का हैंडबुक. मैंने क्यों नहीं बोला? लास्ट ईयर भी बताया होगा ना. A lot of information is covered there. वो किताब काफी है, मेंस के लिए वो काफी है. ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल सब कुछ इन ए concise manner. 9. What about Dictionary of Chemistry? A.H. Beckett. A.H. Beckett. रेडी रेफरेंस के लिए काम आएगा. मोटा मोटा किताब रेफर करने की जरूरत नहीं, सब कुछ मिलेगा इसमें. C2H2 C2H2 trimer, C2H2 tetramer, very interesting compound, C2H2 polymer. What is that called? Polyacetylene. What is its significance? Any one of you know? Conducting plastic. Plastic conductor. Plastics were once believed to be insulators, but they no longer are. The 3 or 4 people who discovered that were given Nobel Prize in the year 2000. I have great respect for them. The reason, they were asked a question, what according to you is the biggest achievement of science? तुम लोग क्या बोलेंगे? Internet, Google, Facebook. For your generation, they are the biggest achievements. You know, huh? WhatsApp. मैं एंड्रॉइड फोन बैग में रख के आता हूं, यूज तक नहीं करता. नाउ इनका जवाब क्या है मालूम? मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस. दैट शॉक्ड मी. What they said was, the population is growing in GP, population is growing in GP and food supplies are declining. अगर अमोनिया नहीं होता, फर्टिलाइजर नहीं होता तो पुराना फसली जो भी है 10 क्विंटल एक एकड़ का उतना ही रह जाता. अभी क्या 60-70 तक बढ़ गया, because of the use of fertilizers. Now 11 CH3CHO acetaldehyde. I think the trimer is called paraldehyde. Tetramer metaldehyde. मैंने बहुत मगब किया फिर भी भूल गया. ये which is metaldehyde, which is paraldehyde, अभी भी डाउट है मेरा. I think this is para and that is meta. This paraldehyde is a hypnotic drug. 12 क्या है? या इथीन पॉलीइथीन. पॉलीइथीन. ये VC-PVC. What is this VC-PVC? Polyvinyl chloride. AN-PAN. What is this AN-PAN business? Acrylonitrile, polyacrylonitrile, Orlon. TFE, PTFE. ठीक है? Polytetrafluoroethylene, which is called Teflon. Where is it used? Non-stick. ये देखो, this is Teflon coated. This board is Teflon coated. That is why even the ink doesn't stick to it. Ink निकल जाता है. Isoprene, polyisoprene. What is this isoprene?
2-methyl-1,3-butadiene. And what is polyisoprene? Whatever is present in natural rubber, latex. Chloroprene, neoprene. 2015 mains में, which of the following is not an addition polymer? One of the options was acrylonitrile. वो polymer भी नहीं. That's the answer. 13. R2SiO enzymes. ये क्या है? सिलिकॉन्स. यह 14th पॉइंट हो गया. P4 enzymes, P4O10 and P4O6 only, no monomer. White phosphorus and red phosphorus. So when we reach this 14th point, I will discuss allotropy. Last point, NO2 and its dimer NO2 twice. N2O4. Make a note. पैराल्डिहाइड मेटाल्डिहाइड ढूंढ रहे हो? कौन सा? ये मेटाल्डिहाइड. ट्राइमर इज मेटाल्डिहाइड. ट्राइमर मेटा. ऐसा ही मैंने परसों रटा था. परसों ही ट्राइमर मेटा आज भूल गए. ट्राई मेटा. कब से? बचपन से डाउट है. Whenever there are two things, I develop that schizophrenia. Split personality आ जाता है. दो चीज है तो इसीलिए मैं एक ही याद रखा हूं. एनसीईआरटी में दिया क्या? हाँ, प्लीज मैंने बताया. क्या भरोसा है वो सही है करके देख के बताया ना. सो उसी टाइम में मुझे याद आता है वो हैंडबुक में दिया हुआ. डिक्शनरी ऑफ केमिस्ट्री में देखा होगा वो टाइम. ये बेकार वेदांती. ओके, लेट अस गो ऑन डिस्कस. Why do they polymerize and how do they? Why and how? Yes, sir. Any question on, any means any. I am not oversimplifying the fact. People tell me, sir, आप केमिस्ट्री बहुत सिंपल तरीके में पढ़ाते हो. मैं क्या बोलता, केमिस्ट्री है ही सिंपल है ना. किताब वालों ने इसको कॉम्प्लिकेट कर दिया बस. बट एज सच केमिस्ट्री इज वेरी सिंपल. The heart of chemistry is very simple. Of course, when you talk about less stable compounds which are not available in abundance, okay, that's a different. Intermediates, transition states,
which don't have long life. We won't study all those things at that level. In your earlier classes like class 6, 7, 8, what compounds you studied? What are the compounds? You studied about uranium hexafluoride, UF6, or zeolite rock. Zeolite. What are the compounds you studied in your earlier classes? Sodium chloride, H2O, simple compounds. Why were they taught to you? Because you are aware of them. Why were you aware of them? Because they are everywhere. Why are they everywhere? Because they are stable. So you start with highly stable compounds, carbon dioxide, highly stable. As you grow older, you will be studying less stable, H2O2, bleaching powder, etc. Further on, in future, you will be studying compounds that are very rare. Research compounds पढ़ते रहेंगे. And I believe all of you will throw away chemistry on the 22nd of May. केमिस्ट्री से पूरा नाता तोड़ देंगे. इतना नफरत हो गया ना केमिस्ट्री से. Which subject you hate most? Chemistry. Majority will say chemistry. उसमें inorganic ज्यादा करके. Yes. Any question on molecules of beryllium, boron, aluminium? Beggar. B for beggar. Think in terms of. By the way, what do you mean by electron deficiency? Less than 8 electrons even after bond formation. देखो, मैंने एक दिन एक डॉक्टर के पास गया. डॉक्टर को बोला, डॉक्टर मुझे भूख लग रहा है. वो डॉक्टर क्या बोलेगा, अरे भूख लग रहा है तो मेरे यहाँ क्यों आए हो, कोई रेस्टोरेंट जाओ खूब खाओ. मैंने बोला नहीं नहीं डॉक्टर मैंने खाया फिर भी भूख लग रहा है. ठीक है तो भाई तो वो बीमारी है. खाने के बाद भी भूख लगना. सोडियम रोएगा क्या, मेरे जो ऑक्टेट नहीं है करके रोएगा क्या? रोएगा. अगर ऑक्टेट चाहिए तो इट कैन गेट एनी मोमेंट, बट जस्ट बाय थ्रोइंग दैट इलेक्ट्रॉन एंड सोडियम इंडीड डज दैट. सोडियम का आदत क्या है? इलेक्ट्रॉन फेक मेटल्स, नॉट जस्ट सोडियम. Metals throw their electrons, whether others catch them or not. Like teachers, we who teach, whether students listen to me us or not. तो सुने नहीं सुने दीवार को भी पढ़ा के चले जाए. समझ में आया ना? ठीक है ना? Sodium will not complain that it is electron deficient. है ना? लेकिन ये बेचारा बेरिलियम बोरॉन क्या है, जितना भी कोशिश करेंगे वो ऑक्टेट तक पहुंच नहीं पाएंगे. All of you might have got it out. Why doesn't beryllium form B2 plus and B3 plus and be happy with the helium configuration? Easier said than done. In the case of boron, you have 5 protons and 5 electrons. If you lose 3 electrons, look at the imbalance. Highly uneven. 5 protons versus 2 electrons. ये protons ये electron को मार डालेंगे. मैग्नीशियम की बात अलग है. 12 protons, 10 electrons. 10 electrons फिर भी 12 protons को टक्कर कर सकता है. They can still fight. But beryllium and boron doesn't form ionic compounds. What is the wrong way of learning? They are small cations. Small cations are more covalent. Fazan. Think in terms of electron deficiency. मैं लाइटर वेन में इसीलिए पढ़ाता हूं
Otherwise chemistry will become taxing, monotonous बन जाएगा. तो थोड़ा lighter vein में. And that too, comparing situations in daily life. Compare chemistry with situations in daily life. They look for food, donors, and they are Louis acids, beggars. या मेरा पानी का बटल उधर रहा, देखो गर्म हुआ तो थोड़ा ठंडा पानी पी गया. यहाँ कहीं फ्रिज है, ऊपर है, ऊपर से थोड़ा ठंडा पानी. It's like summer, how? October heat, but night time temperatures dip down to 16. Now BeCl2, 2 plus 2, 4, less than 8 electron deficient. What is the 2 plus 2? What is the 2 plus 2 करके पूछा, how much is that करके नहीं पूछा. LKG का addition. Beryllium खुद का 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन shared by chlorines, 2 plus 2. Now, so if it dimerizes, अभी 3 plus 2 plus है ना, अभी 6 हो गया. 2 plus 4, 2 plus 2 plus 2, फ्री में जो 2 मिल गया ना, फ्री 2, 2 plus 2 plus 2, 6. Even now electron deficient, even now also electron deficient. आज हम 13 तक कर पाए तो हो जाता है. How does it polymerize? BClCl. हाँ? अच्छा ठंडा. बाहर गया क्या? ठीक. Yes. Which of the following is electron deficient? Not electron deficient. This one. Octet मिल गया. बेरिलियम को देखो, ये 2 4, ये 2 और ये 2. Now, what about AlCl3? The same situation. Electron deficient with 3 plus 3, 6 electrons. Al2Cl6 is not electron deficient, and I told you it's possible even in gaseous state, because 2 molecules can always collide in when they are in gaseous state. More than 2, no guarantee. Thank you. ठंडा है क्या? Why doesn't it polymerize? Don't tell me it doesn't need.
ऐसा अल्यूमिनियम एंड क्लोरीन मिलके बड़ा है ना, दे कैनॉट फॉर्म लॉन्ग चेन, लंबा चेन फॉर्म नहीं कर सकते। पॉलीमरेज हो तो वेरी वीक है ना, ये मुमकिन नहीं है। बेरिलियम की बात अलग है, छोटा है, इट कैन पॉलीमरेज। नाउ RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड पोलर सॉल्वेंट्स में क्या हो जाएंगे? RCOO माइनस H प्लस, दिस इज कॉल्ड डिसोसिएशन। पोलर सॉल्वेंट में H प्लस निकल के आएगा, बट नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में क्या होता है? देखो भैया, पोलर सॉल्वेंट में H प्लस बाहर क्यों आएगा? उसको लोन पेयर मिलेगा ना किसी का भी। पोलर कब होगा? जब लोन पेयर है तो ही पोलर होगा। लोन पेयर वाला दे दे। नाउ बट इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स RCOOH, बेंजीन, बेंजीन में H प्लस बाहर निकल के आएगा क्या? बेंजीन में H प्लस बाहर आए तो उसको क्या मिलेगा? घास तक नहीं मिलेगा। बेंजीन क्या है? कुछ नहीं। तो यहां so first two cases, yes, the first two cases the dimerization was through dative bond. How did they dimerize? Dative bond. यहां क्या है? सॉरी, हाइड्रोजन बॉन्ड। So carboxylic acid dimerize, this is called association. पोलर में डिसोसिएशन, नॉन पोलर में एसोसिएशन। हाइड्रोजन बॉन्ड, या Why does BH2 polymerize? वही आंसर, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। How does it polymerize? Interesting case. हाँ, क्यों भैया? बेरिलियम looks for donor है ना? बेरिलियम will be looking for donor. कौन डोनेट करेगा? किसके पास है जायजा? किसके पास है? किसी के पास नहीं है ना। फिर हाउ डू दे कंबाइन? टाइप ऑफ बॉन्डिंग, या व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग? बनाना बॉन्ड। हाइड्रोजन क्या करेगा? ए बेरिलियम को इलेक्ट्रॉन दे दो, पेन दे दो। हाँ, he wants a pen. He wants a pen. I don't have a pen. What will I do? I will take it from him and give it to him. Now, what is this called? And I am telling you, who can do that? Who can do this? Only a highly electronegative element. You know, hydrogen is more electronegative than beryllium. It can withdraw electrons. This is called 2 electron, 3 centered bond. So, अभी तक 2 dative bond, 1 hydrogen bond. So, we will see all types of bonding in polymers. Next, HNO twice only. बता, तो structure ड्रा करो. I know how you would have liked it to draw OH. लेकिन तुम लोग क्या करेंगे? E. डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड H. ऐसे क्यों नहीं होगा? ऑक्सीजन हाइड्रोजन को नाइट्रोजन के लिए नहीं छोड़ेगा, खुद बॉन्ड फॉर्म करेगा। ऑक्सीजन जहां तक हो हाँ, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव के साथ बॉन्ड फॉर्म करना चाहिए। सो यहां इनका वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हुआ, देयरफॉर 2 ऑफ देम कंबाइन, हाइपोनाइट्रस एसिड एंड व्हाट इज दिस? दिस इज ए डबल बॉन्ड।
Which of the following has a double bond? H2 and 2O2. NN bond. Normal covalent double bond. Hg2 2 plus only. I think this is the sixth one, no? Hg2 2 plus only. No monomer. No monomeric Hg plus. देखो mercury 1 chloride का फार्मूला क्या है? Mercury 1 chloride. हाँ, वो जमाना गया जब हम इसको mercuric mercurous copper 1 oxide, copper 2 oxide, cuprous, cupric. Instead of that, we simply use the oxidation state. Yes, sir. What is the formula of mercury 1 chloride? Mercury 2 chloride, it is clear. Mercury 2 simple. It is HgCl2. Mercury in plus 2 oxidation state. How about this? Mercury 1 का फार्मूला क्या है? Hg2 2 plus है ना? इसको दो क्लोरीन दे दो. Hg2Cl2. Don't cancel the 2's. Empirical formula मत लिखो. Hg2Cl2. Why and how it dimerizes? Anybody? Zinc, cadmium, mercury, all three belong to the same group. To be. Yes? Yes, sir. 3d10 4s2. ये d10 s2 वाला है ना, ये 4 है, ये 5d10 5d2 6s2 5d10 6s2. इलेक्ट्रॉन रिमूव करो. इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो क्या होता है? Hg प्लस 5d10 6s1. इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना है? फर्स्ट S से फर्स्ट, NS फर्स्ट एंड देन ओनली N-1d. अभी यहाँ Hg plus has one unpaired electron. Hg plus में एक unpaired electron रह गया ना. Therefore, that combines with another Hg plus, get rid of the unpaired electron. You know, normal covalent bond. Wow. Now, 2004 again, this question was given in the screening test. HgCOSCN 4 times. I think इसका मैग्नेटिक मोमेंट पूछा गया. मैग्नेटिक मोमेंट पता करने के लिए पहले हमको ऑक्सीडेशन स्टेट तो मालूम चलना चाहिए. थायोसाइनेट तो -4 है, ये पक्का है.
यहां mercury 2 cobalt 2 है, या तो mercury 1 cobalt 3 है. Is mercury 2 or mercury 1? क्यों? हाँ, 1 रहा तो वेरी गुड, वेरी गुड. एक मिनट, मेरा आंसर क्या है मालूम? वो भी सही था. +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोऑर्डिनेशन नंबर कभी भी 4 काफी नहीं रहता, 4 लिगेंड्स काफी नहीं रहता. +3 में 6. लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है. देयर इज नो व्हाट यू कॉल प्रूफ. एक स्टूडेंट ने बताया, सर अगर ये mercury 1 होता, इसका फार्मूला Hg2COSCN4 टाइम्स 2 हो जाएगा. कोबाल्ट +3 होते -1 है ना, ये Hg2 2+ है ना, तो दोनों का डबल डबल होना है. मैंने पूछा, रे तूने कहा पढ़ा? उन्होंने बोले, सर आप ही ने पढ़ाया ना Hg Hg2 2+ करके. मैंने पढ़ाया, उन्होंने अप्लाई किया, है ना. वही सी के बोलते दिमाग, ठीक है ना. स्टूडेंट्स का एप्लीकेशन ज्यादा रहता है हम टीचर लोगों से. हम क्या है, सिर्फ कैसे दौड़ना बोलते हैं, खुद दौड़ नहीं सकते. दौड़ सकते हैं क्या? ठीक है ना. 5 मीटर भी दौड़ नहीं पाएंगे. आवर जॉब इज ओनली टू मेक यू रन, नॉट रन आवर सेल्फ. टीचर्स जॉब इज दैट ऑफ ए कोच. कोच खुद नहीं खेलेगा, खेल हाउ टू खेल सिखाए. नाउ तू मुझे कोई पेपर दे दो, मैं सॉल्व कर नहीं सकता. वही पेपर हाथ में दे दो, बोर्ड में सॉल्व कर. टेबल पे बैठ गए, मेरे बस की बात नहीं. बोर्ड में पढ़ा, सॉल्व करा. नाउ चलो, ICl3, how does it dimerize? Why does it dimerize? ICl3 twice. अरे इसका क्या परेशान है यार, 7 + 3 10 इलेक्ट्रॉन है, और डाइमराइज क्यों होना है? बोलो तो क्या हुआ? ICl3 has T shape and the lone pairs are 120 degrees apart and they repel. ये कैसे डाइमराइज होगा? हाँ, I2Cl6. क्या फायदा हो गया? 3 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, इट इज कॉल्ड टी शेप. अब क्या हो गया? यहां आयोडीन का लोन पेयर अफेक्ट नहीं हुआ. which लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग? क्लोरीन का. बॉन्ड तो एक बढ़ गया, लोन पेयर जैसा वैसा रह गया. मतलब 4 बॉन्ड पेयर्स, 2 लोन पेयर्स, 4 bond pairs, 2 lone pairs, both iodines, बोलो, both the geometry around both the iodines is square planar. Geometry around both the iodines, एक लोन पेयर ऊपर, एक लोन पेयर नीचे. एक बच्चा पूछ रहा था, सर आई सिंगल बॉन्ड लिख सकते हैं ना? ये मुमकिन नहीं है. क्यों? Iodine can form 3 bonds, 5 bonds, 7 bonds. Whenever it goes to the next excited state, addition of 2 bonds will take place because you are breaking a pair to get 2 unpaired electrons. Yes or no? So, ये नामुमकिन है. एक और स्टूडेंट पूछता है, सर डबल बॉन्ड लिखेंगे क्या? अरे बाबू, जबकि P डबल बॉन्ड P नहीं है, ऑक्सीजन doesn't form a double bond. Nitrogen N triple bond N H. Nitrogen exists diatomic N2, but phosphorus exists P4. Why? Huh?
फास्फोरस को तो 3 बॉन्ड चाहिए चाहिए, and in its elementary state it cannot form a triple bond because of its big size. Size बड़ा है ना, overlapping of 3p orbitals is not मुमकिन. 3p orbitals overlap, 2p चलेगा. तो फिर हाँ, हर एक फास्फोरस को मिनिमम 3 बॉन्ड चाहिए ना. दूसरा देखा तो सिर्फ फास्फोरस है ऐसा. हाँ, now 1 2, that is why it has acquired a tetrahedral shape, because each phosphorus should form 3 bonds with a pyramidal geometry. सबका pyramidal है ना, पहला वाला ऐसा झुक गया 3, so तीनों phosphorus इधर है 1 2 3, 1 2 3. A natural tetrahedron is formed. समझ में आया? So that is an NCERT question. Why doesn't phosphorus form diatomic P2? Whereas nitrogen is diatomic, phosphorus is tetraatomic. Why is sulfur octatomic? देखो, sulfur has 2 hands with 2 lone pairs, 2 bonds and 2 lone pairs. Means इसका हाथ ऐसा हो गया. So each sulfur should have 2 other sulfurs in a V shape. So यहाँ एक sulfur है. So 1 sulfur, 2 lone pair, V shape, एक sulfur इधर, दूसरा sulfur. और ये sulfur का दूसरा V shape बनना है ना. इसका V, इसका V, इसका V, इसका V, 1 2 3 4 हो गए. सबका भी. Therefore sulfur is forced to be octatomic यार. Oxygen is diatomic. Sulfur cannot form a pi bond, it cannot be diatomic, and the geometry around each sulfur is bent. V shape, not even bent, V. So minimum of 8 people were required to complete the circle. Now, कौन सा 7th one हो गया ना. Now 8 to 13, 8 to 13, polymerization through a pi bond. What is that called? Break the pi bond and combine. Addition polymerization. Addition polymerization. सबके पास वो 38 इसका किताब है ना, 36 38, हाँ, उसी को ही सॉल्व करो ज्यादा करके. फिलहाल के केमिकल बॉन्डिंग एंड पी ब्लॉक डाउट पूछ सकते. एंड आई स्ट्रांगली बिलीव दैट केमिस्ट्री मीन्स केमिकल बॉन्ड, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, फिजिकल. व्हाई इज HCl स्ट्रॉन्ग एसिड? बिकॉज क्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, खींच लेगा लाइक दैट. हाँ, यूज 1 pi bond only. Use 1 pi bond only per molecule. Per molecule. ज्यादा pi bond होंगे फिर भी एक ही pi bond यूज करो. Use 1 pi bond only per molecule and highlight that pi bond. Highlight, उसी को highlight करो. हाँ, ये pi bond लेकर के क्या करना है? 1 pi bond, उसको लेकर क्या करना है? यूज करो करके बोल रहा हूं. हाँ, to connect the unconnected. To connect the unconnected. जिन दोनों के बीच में बॉन्ड नहीं है, उन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाने के लिए यूज करो. Highlight the bond, highlight the pi bond. Highlight that bond only.
सिर्फ उसी को ही हाईलाइट करो, बाकी लो लाइट करो. हाँ हाँ हाँ. ये भी रिकॉर्ड हो रहा है. हाउ टू ड्रिंक वाटर डेमोन्स्ट्रेशन. Yeah. Metaphosphoric acid. Draw the structure of monomer. HPO3. Monomer. One phosphorus, one OH, दो double bond. Dimer means a group of two molecules. Dimer, दो molecule ले लो. P double bond O. इसको हाईलाइट करो, इसको लो लाइट करो. P double bond O. बस. So for a dimer, you are using two pi bonds, that is 4 atoms. So plan for a quadrilateral. Quadrilateral. OH double bond O. HNO का डाइमर देखो. HNO का डाइमर के H2N2O2 है ना. What is its basicity? Even in the dimeric state, the basicity is 2. Even in this dimeric state, the basicity is 2. That I am proud that my generalization holds good even in the polymeric state. H2P2O4, sorry, HPO3 twice है ना. H2P2O6. What is the H3P3O9? Basicity of H3P3O9 है क्या? HPO3 thrice, trimer, 3. जितना H हो उतना, that rule holds. That's not a rule. That observation holds good even in the polymeric state. Trimer बना दो. HPO3 thrice. Trimer means 3 लेना है ऐसे, 1 2 3. Plan for a hexagon. Hexagon. P double bond O. P double bond O. P double bond O. Hexagon. The number of PP bonds in cyclic metaphosphoric acid, 0. OH. The number of OH groups, 3. How do you polymerize? How do you polymerize? नींद आ रही मस्त. HPO3 n times. P double bond O, P double bond O, P double bond O, double bond O, OH. Every phosphorus is punctuated with a double bond O and a OH. Connect the unconnected. Long chain of PO, PO, PO.
SO3. Draw the structure of monomer. One sulfur, 3 oxygens. S double bond O. Plan for a hexagon. These two are called prosthetic oxygens. Extension. Prosthetic. Like a walking stick. Extension. Break and make. SOS 2002 screening में the number of SS bonds in cyclic trimer of SO3 0. Acetylene. HC triple bond CH and a dimer HC triple bond CH. What type of reactions alkenes and alkynes undergo? Electrophilic addition. Where is the electrophile? H plus is the electrophile. H plus. This is acidic hydrogen, na? sp hybrid carbon. Therefore, break the bond, break and make to connect the unconnected HC, H. What is this called? Vinyl acetylene. Because acetylene at vinyl position. कॉमन नेम का स्पेलिंग के लिए ढूंढना नहीं, कुछ भी लिख, TY लिखना है, TE चलेगा. Three C2H2 red hot tubes. क्या बनेगा? बेंजीन. Why is red hot? हीट क्यों है? रेड हीट. Break pi bond. What is the significance of this tube? When a gas goes through a tube, it exerts pressure, high pressure. So, high pressure के लिए ये लगाते हैं. So, break and make. Only one pi bond. CH triple bond CH. Trimer. CH triple bond CH. Benzene. How about a tetramer? Tetramer means 4 pi bonds. So plan for an octagon. CH triple bond CH. CH triple bond CH. CH triple bond CH.
1357 cyclooctatetraene. 1357 alternatively. 1357 cyclooctatetraene. Anti-aromatic. Most important, CH polyacetylene. Yeah, this is a conducting plastic. How does that conduct? When you apply a potential difference, you keep a positive charge here. What happens? All the pi bonds will tend to ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा. Potential difference apply करो. ये positive के पीछे सब लोग निकल जाएंगे, and that too very easily. Pi bond है weak bond. Therefore, this is a conductor. Since the pi electrons are oscillating with ease, pi electrons ऐसे हिल रहे हैं ना, आसानी से हिल रहे, तो such a substance will be colored also. Reason for color मैं बताने वाला हूँ. Extended conjugation, too much of conjugation. When a potential difference is applied, the pi bonds run one after the other. Plastic conductor, polyacetylene. What next? Acetaldehyde. CH3 CH double bond O. CH double bond O CH3. CH double bond O CH3. You plan for a hexagon. 1, 2, 3. 135. This is trimeta, metaldehyde. The tetramer, octagon plan करो. CHO. So why am I giving you so many examples? So that you get the practice. Polymerization आसानी से हो जाना चाहिए. This is paraldehyde. And this metaldehyde, I think, is a hypnotic drug. ये वाला है, ये वाला. Paraldehyde is a hypnotic drug. So BRFA में FBRF एंगल्स कितना? BRF5 में FBRF 90 डिग्री एंगल्स 0 और 8. हाँ, देयर इज अनदर स्कूल ऑफ थॉट. एक और आर्गुमेंट वाले भी देखा मैंने. अरे बाप रे. BR प्रोमीन यह है भूत के जैसा अबव द ग्राउंड रह गया. ये 90 तो रहेगा ना. 4 बोलने वाला आ गया. ब्रोमीन ऐसा रहा तो FBRF 90 होगा. ऐसा रहा तो यह क्या है? ब्रोमीन. ये क्या है? फ्लोरीन. ये फ्रेमवर्क पूरा ऊपर उठाया
तो 90 तो 90 ही रहेगी ना। तो एक भानु प्रताप सिंह करके नेरुल में ही मुझे समझा रहा था 4। एक और आंसर 048। नॉनसेंस। इथीन पॉलीथीन, what is ethene called? Monomer. Ethene is called monomer. Break the bond. What is this called? Addition polymerization. CH2 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 like that. ये पॉलीमर है. This is repeating unit. Whatever we write inside the bracket is repeating unit. Polymer CH, ये monomer है. CH2 CH2 n times, ये polymer है. And what is the repeating unit? CH2 CH2 is the repeating unit. पता नहीं क्यों बहुत एग्जाम्स में मैंने देखा रिपीटिंग यूनिट पूछते, मतलब why are they so particular about that? I don't know. Even last year's KVPY also there was a question on repeating unit. Polystyrene मेरे ख्याल से ओलंपियाड में है इस बार का ओलंपियाड का भाई ओलंपियाड you are not giving a Next, ethene, polyethylene, VC, PVC. This is the polymer N and this is the repeating unit. AN. What is AN? Acrylonitrile monomer. Vinyl cyanide. Vinyl cyanide. Cyanide at vinylic position. Polyacrylonitrile. What is this called? Vinyl aldehyde is called acrolein. Acrolein. For a long time, I was of the opinion that this is present in betel nuts. Nut powder है तो nut powder. Betel nuts में acrolein है करके. लेकिन this nut powder is, this is not an alkaloid. Only alkaloids develop that habit. What is that called? Dependence. We become dependent only when we use alkaloids. बाद में मुझे पता चला that is ericolin. Acrolein नहीं. Ericolin is another alkaloid. I was mistaken about this. Acrolein. Now, TFE, CF2 double bond CF2, tetrafluoroethylene. That polyacrylene is also called Orlon. CF2 single bond CF2, polytetrafluoroethylene.
Teflon. What is the significance of this? Non-stick, okay. This is the only compound with which fluorine doesn't react. क्योंकि यह कौन है ऑलरेडी? फ्लोरीन है ना. एक फ्लोरीन जाके दूसरा फ्लोरीन को क्या करेगा? Fully fluorinated compound. Therefore, you can store fluorine in Teflon containers. And even in the Denny's method, where fluorine is manufactured electrolysis, ये देखो कितना मुश्किल है. देखो HF को इलेक्ट्रोलाइज करके फ्लोरीन तैयार करना है. देयर आर 3 डिफिकल्टीज. HF का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा, इसको मेल्ट करना मुश्किल है. मेल्टिंग पॉइंट नहीं, KF से तैयार करना है. KF का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, मॉल्टन स्टेट में लाना मुश्किल है. दूसरा हम क्या करेंगे, KF को HF मिला के KHF2 बना के वो KHF2 उससे काम चलाएंगे. दूसरा, बहुत कोशिश करके फ्लोरीन तैयार भी हो गया, ठीक है, एनोड में फ्लोरीन आ गया. वो फ्लोरीन वो एनोड को खाएगा. एनोड में कॉपर लिया तो कॉपर को खा जाएगा. सो डेनिस ने क्या किया कि कोटेड दिस विद टेफ्लॉन कोटिंग किया. टेफ्लॉन कोटिंग किया तो अभी फ्लोरीन आएगा, टेफ्लॉन को कुछ कर नहीं पाएगा. दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टेफ्लॉन, non-stick plastics. Fluorine reacts with everybody, including xenon. Now, what next? Isoprene, polyisoprene है ना? What is isoprene? 2-methyl 1,3-butadiene. CH2 double bond CCH3. क्या होगा? यूज 1 pi bond ओनली. ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा. What is this called? What is this called? 1,4 addition. What is this called? Addition at the first and fourth position. अगर इसको 1 बोला तो ये 4 होगा, फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन. तो polyisoprene is natural rubber. पॉलीमर है, इससे मोनो बनता है. 1,4 एडिशन. सो 2015 में एक क्वेश्चन दिया तो 1,4 एडिशन का, रात 1 बजे तक लोग चर्चे इसके ऊपर. कोई बोलता है 1,4 मेजर प्रोडक्ट है, 1,3 मेजर प्रोडक्ट है. नहीं, काइनेटिकली कंट्रोल्ड है. तो काइनेटिकली कंट्रोल किया तो क्या होता है? काइनेटिकल कंट्रोल मीन्स जल्दी किया तो 1,2. थर्मोडायनेमिक कंट्रोल किया तो ऐसा. लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, इसी यही चर्चा. फाइनल IIT वालों ने सीधा 1,4 एडिशन ही दिया, बिकॉज तुमको 1,4 एडिशन ही पढ़ाया गया. वो रबर का है ना. काइनेटिकल कंट्रोल मीन्स वो पाई बॉन्ड यहां आने से पहले ही ब्रोमीन अगर अटैक किया तो, पहले ये पाई बॉन्ड इधर जाता है, वो पाई बॉन्ड इधर आता है, उसके आने से पहले ब्रोमीन आ गए तो 1,2.
तुम भी चर्चा करते रहते क्या? 1 4 1 2 कोटा की स्टाइल में। कोटा में चाय टपरी वालों को भी ये सब पता चलता है केमिस्ट्री। सर वो थर्मोडायनेमिक्स का 4th क्वेश्चन है ना, उसका आंसर बी है। रिक्शा वाला टपरी वाला भी केमिस्ट्री सिखाएगा, क्योंकि पहले वो कोचिंग लेके ही उधर आया ना। बंद कर।